नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड वेलकम इवनिंग। ऑल। जितने भी हमारे साथ हमारे साथी स्नेहीजन है, उन सबका स्वागत। फेसबुक पर जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी तहे दिल से, मन से स्वागत। आज इस फेसबुक लाइव में हम एक मज़ेदार काम करने जा रहे हैं। हर साल इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट इस संस्था की माध्यम से एक संदेश वर्ल्ड थिएटर डे मनाने के लिए प्रसारित किया जाता है। इस साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ज्येष्ठ निर्देशक पीटर सेलर्स, इन्होंने इस साल का जो संदेश है वो दिया है और इस संदेश को 10 भारतीय भाषाओं में भाषांतरित किया है। ये भाषांतर जिन्होंने किया है उनमें से काफ़ी लोग आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम उनके साथ बातचीत करने वाले हैं कि इस साल का जो संदेश है उसके बारे में उन्हें क्या लगा और उसको भाषांतरित करते वक्त उनका क्या अनुभव रहा, उनके मन में कौन से ख्याल आए, कौन से विचार आए और क्या वो कुछ और बात करना चाहते हैं। तो इस तरह से आज हम ये हमारे जो भाषांतरकार है उनके साथ बात करेंगे। इस संदेश का आसामी भाषा में भी भाषांतरण हुआ है, जो किया है बोरनाली डेका और जुगेश कालिता, इन दोनों ने। दुर्भाग्यवश वो आज हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में कभी हमें यह मौका मिलेगा कि इन दोनों के साथ भी हम बात कर पाए। This message has been translated into Marathi by a senior actress from Maharashtra, theatre practitioner, known film actress, Vibhavari Deshpande. So I welcome Vibha. I'm happy that you are able to join us today, and I'm really glad that you could translate the message in Marathi. And I would like to ask you your thoughts about the message and whatever you would like to share about the translation or anything else. So Prasad, to start with, I want to thank you for thinking of me to do this job. I'm not an academician, I'm not a linguist. I'm a theater practitioner and I write mostly for children, as Prasad knows. So when he asked me, I was very excited कि अरे he thought of me and I wasn't, तो मैंने हाँ बोल दिया, पर जब मैंने लेटर पढ़ा तो I realized it was a very difficult task. He's a very big director, very big practitioner, तो उनका एक्सपीरियंसेस, उनका अभ्यास बहुत ज्यादा है थिएटर का। और मुझे लगा कि 2 साल के पैंडेमिक के बाद जो लेटर उतरा था वो बहुत ज्यादा इमोशन ड्रिवन था। जो भी चर्निंग 2 सालों में सिर्फ उनके मन में नहीं, हम सबके मन में, हर थिएटर प्रैक्टिशनर के मन में या फिर हर आदमी के मन में हुआ था, जो एक हेल्पलेसनेस, एगनी, पेन सबने महसूस किया, वो सब उस लेटर में उतरा है। वो इतना ज्यादा इंटेंस और इतना ज्यादा इमोशन ड्रिवन है कि वो समझना, वो क्या कह रही है समझना भी मेरे लिए मुश्किल था, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था कि ये क्या कह रहे हैं इससे। बहुत the sentences are intermixed in each other, there are long statements, there are enlisting of various emotions that you go through. तो ये सब मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था। मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा मेरे से तो नहीं होगा। there was one point where I very honestly I wanted to tell Prasad कि maybe some linguist or a practitioner or a better equipped person should do this, but then I said he has trusted me with this, so I have to do my best. तो मैं करती गई एक मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे भाव उसका रूपांतरण, मतलब ट्रांसलेशन नहीं कर पाऊंगी मैं। आई हैव टू ब्रिंग इन द होल इमोशन एंड द होल एक्सपीरियंस दैट ही हैज रिटन इनटू मराठी। वैसे लैंग्वेजेस के तो इट्स रिवर्स लैंग्वेज, मराठी और इंग्लिश, तो जो टिपिकल ट्रांसलेशन के चैलेंजेस होते हैं वो तो थे ही, पर उसके साथ वो जो कहना चाहते थे उसके लिए अप्रोप्रिएट मराठी शब्द ढूंढना, क्योंकि मराठी में इतनी ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है, शायद इतर और भाषाओं में भी ये हो, पर मराठी में तो हम इतना ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं कि
कई शब्द ऐसे हैं जिनका मराठी में अगर ट्रांसलेट करो तो इट साउंड लाइक अ फॉरेन लैंग्वेज इवन टू अ मराठी स्पीकिंग और रीडिंग पर्सन. तो विदाउट मेकिंग इट साउंड वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड हैवी एंड अनअंडरस्टैंडेबल, आई ट्राई टू, मैंने कोशिश ये की कि उसका भाव उसमें अच्छी तरह से आए. आई होप कि वो कोशिश सही रही है. और मैं अभी तक रुकी हूँ कि प्रसाद मुझे कुछ फीडबैक दे. उसने अभी तक मुझे फीडबैक नहीं दिया, शायद इस चैट के बाद होगा. और मुझे ऐसा लगा कि इतनी सारी भाषाओं में ये ट्रांसलेट हुआ है, काश मैं ये सब पढ़ पाती और ये सब समझ पाती. पर मैं और कोई भाषा जानती नहीं हूँ. बट आई एम श्योर एवरीबडी हैज डन अ ग्रेट जॉब, और आई एम क्यूरियस टू एक्चुअली नो व्हाट एवरीबडी हैज डन. सो थैंक यू प्रसाद, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इतने सारे लोगों के साथ इस प्रोसेस में जुड़ गई हूँ मैं. थैंक्स टू यू. Thank you, Vibha, for that quick kind of giving us a 4 to gist 5 of minutes. right. And it has turned out really well. मराठी में जब पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि ये शायद उन्होंने मराठी में ही लिखा होगा. And I'm sure the same case would happen in other languages as well. मराठी समझ लेता हूँ, हिंदी समझ लेता हूँ, पढ़ पाता हूँ, तो ज़्यादा आसान. यकीन है कि जो भी लोग आज हमारे साथ है, सबका अनुभव ये होगा कि जो किया है तो करने के बाद ऐसा लगे कि वो अपना खुद का है, अपने खुद की भाषा में ही वो किया जा रहा है. तो विभा, थैंक यू for joining us, and I would now request Bashir Sahab from Kashmir to give us his experiences, his response to the message. ये हमारे जितने भी ट्रांसलेटर्स इस साल के हैं उनमें बशीर साहब सबसे वरिष्ठ है. तो मैं आपसे नमस्ते कहता हूँ. आपसे प्रत्यक्ष तो कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन इस बहाने मौका मिला आपके साथ बात करने का. And I'm really happy that this message has been translated into Kashmiri as well. One of the things that I'm happy about is this time we were able to do it in 10 languages, and I'm sure next year we will try to do in many more, which we couldn't do this year. खैर वो तो आगे की बात. बशीर साहब, मैं चाहूँगा कि आप इस मैसेज के बारे में, इस संदेश के बारे में आपको क्या लगा और उसको भाषांतरित करते वक्त आपके मन में क्या ख्याल थे, ये जरा हमारे साथ साझा कीजिएगा. शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने जो मेरे बारे में कोई बातें कह दी, इसमें इस काबिल नहीं हूँ, इतना वरिष्ठ नहीं हूँ. हाँ, उम्र में आपसे बड़ा हूँ. तो जब आपने मेरे साथ ये राब्ता किया और जब ये मैसेज मैंने पढ़ा पीटर जी का, मुझे वाकई लगा ये हिंदुस्तान के किसी वरिष्ठ प्रोफेशनल थिएटर प्रोफेशनल ने लिखा है, क्योंकि ये यहाँ की संस्कृति के साथ बहुत जुड़ा हुआ था. जब वो गौतम बुद्ध की बात करते हैं, जब वो ट्रेडिशंस की बात करते हैं, जब वो रिचुअल्स की बात करते हैं, जब कोविड के हवाले से वो मीडिया की बात करते हैं, उन पर वो पंच मारते हैं, ऐसा पंच कि जो हम अक्सर लेन देन में करते हैं, बातों में करते हैं. तो मुझे लगा वाकई उन्होंने इस दौर में he has touched the hearts of the common man. और सबसे पहले ये कि ये मैसेज मुझे पहले लगा कि ये एक थिएटर प्रोफेशनल का थिएटर प्रोफेशनल्स के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है. जैसे वो पहले भी कहते हैं कि बहस तकलीफकार मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ. तो उसने मेरी लाइन डिटरमाइन कर ली कि मैं इसको कैसे ट्रांसलेट करूं. इसमें यह है कि एक तो होता ना कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो अक्सर करते हैं, तो मैंने एक आइडिया बनाया कि आई मस्ट ट्राई टू ट्रांसक्रिएट इट, कि मैं ट्रांसलेट ना करूं. जो अपने अनुभव है, जो अपनी जमीन के साथ हम जुड़े हुए हैं, जो हमारी थिएटर के अपनी एक्सपीरियंस है, इनसे जुड़कर, इसके इन ख्यालात से, एहसासात से, जज्बात से जुड़कर कोशिश करूंगा कि मैं अपने लफ्जों में, अपनी कश्मीरी जुबान में उसको ट्रांसलेट करूं. तो मुझे ज्यादा मुश्किलात नहीं आई उसमें. असल में वजह यह है कि जो उन्होंने कहा, मैं तकरीबन यही बातें अक्सर कहता हूं. पेशेंस की बात है तो थिएटर डिमांड्स द हाईएस्ट काइंड ऑफ पेशेंस. जब आप
मीडियम ऑफ थिएटर और अपना थिएटर इडियम की बात करते हैं, तो वहां पर आप अपनी फोक कल्चर, ट्रेडिशनल रिचुअल्स के साथ जुड़ जाते हैं और वहां से आप अपना मीडियम क्रिएट करते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूं हबीब तंजीर साहब की, तो उन्होंने थिएटर ऑफ द रूट्स जब क्रिएट किया तो उन्होंने उसको वहां के साथ जोड़ा। तो इनका अभ्यास भी था, एहसास भी था, इशारा भी उसकी तरफ था कि हमें उस क्षेत्र में भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात इसमें जो मुझे ज्यादा स्ट्राइक कर गया वो था कि थिएटर करने के लिए जो पेशेंस चाहिए, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पेशेंस, वो यहाँ के थिएटर वालों के लिए, नए थिएटर वालों के लिए बहुत कम है। तो वो स्ट्रॉन्ग मैसेज था इसमें कि वो उन आने वाले नई नस्लों के लिए कि आप इसको, ये जो थिएटर मीडियम है, इसको लग्जरी एंटरटेनिंग ये आर्ट में समझे, इसको मनी मेकिंग, ये मैं अक्सर कहता हूँ इट इज ए लर्निंग इंस्टीट्यूशन। अर्निंग इंस्टीट्यूशन तो दूसरे है, फिल्म है, टीवी है। तो वहां से मुझे एक गाइडेंस मिल गई अपने इस को कश्मीरी में करने में। और यहाँ पर जिन लोगों ने ये पढ़ा है उन्होंने कहा कि हमें लगा, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने इंग्लिश भी भेजा, तो उन्होंने कहा कि हमें लगा कि आपने बिल्कुल जैसे आप दोनों एक जगह बैठे हुए हैं और इकट्ठे बैठकर आपने, उन्होंने इंग्लिश या फ्रेंच में लिखा है तो आपने कश्मीरी में लिखा, बिल्कुल एक वो संवाद क्रिएट हुआ है। तो वो कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी, शुक्र है कि वो मुझे एहसास मिला, लोगों से फीडबैक मिला कि वो एहसास कन्वे हुआ है, कम्युनिकेट हुआ है। ये जरूरी होता है कि आदमी जब बात करेगा तो वो बात कम्युनिकेट होनी चाहिए, लोगों के दिलों में असर करनी चाहिए, लोगों के जहनों में उतर जानी चाहिए। और अंग्रेजी में बात की गई है तो उसको कश्मीरी में लोगों तक पहुंचाना, भले ही आप लोग ना समझे, लेकिन यहाँ पर जो थिएटर वाले हैं जितने बहुत कम है, यहाँ बाहर भी बाहर की दुनिया में भी बहुत कश्मीरी लोग हैं, उनको भी मैंने अपना ट्रांसलेशन भेजा कि जरा चेक कर लो ठीक हुआ है या नहीं, तो दे अप्रिशिएटेड इट। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दाद दे दूं, मुबारक दे दूं पीटर जी को कि उन्होंने जिस एहसास को उजागर किया है, बहुत कम लोगों ने इस तरह से थिएटर, इस वर्ल्ड थिएटर डे पर ऐसी मैसेज देकर हमें जागरूक किया है, हमें ललकारा है, बल्कि हमें झंझोड़ा है कि आप लोग को किस लेवल पर इस थिएटर को आगे ले जाना है। क्योंकि ये जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे वो कहते हैं क्रिएशन ऑफ ऑन अर्थ ऑफ ह्यूमन लाइव्स, एनिमल्स, प्लांट्स, यानी पूरी कायनात को जोड़ दिया है हमारे इस थिएटर मीडियम में। और मैं अक्सर कहता हूँ थिएटर मेक्स ए नेशन वाइज एंड वाइब्रेंट। तो ये विजडम जो है, अगर आपने तारीख पढ़नी है, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, आप महाराजों, राजों और सियासत की तारीख पढ़ सकते हैं, लेकिन थिएटर से आप क्या पढ़ सकते हैं? दैट इज द हिस्ट्री ऑफ माइंड। लोगों के जहन पढ़ सकते हैं, और इस मैसेज ने इस साल लोगों के जहनों को पढ़ा है और उसको कम्युनिकेट किया है। तो ये मेरा एक अनुभव था इस मैसेज को लेकर और अपनी ट्रांसलेशन को लेकर। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बशीर साहब। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के, और आपने जो कहा वो चीज़ तो हम नाटक वाले लगातार कहते रहते हैं कि नाटक करते वक्त भी अगर हमारा नाटक अपनी ज़मीन से जुड़ा हो तो वो आसमान को छू सकता है। और इस मैसेज में जो पीटर सेलर्स साहब ने जो कहा है और आपने उसको जिस तरह से समझा है, सोचा है और जिस तरह से अभी बयान किया है, वो वही बात है। और हमें अगर थिएटर वाले लोग अपनी जड़ को पक्का रखे, मजबूत रखे, तो बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो होता ही रहेगा, हो जाएगा। थैंक यू बशीर साहब, आपने आज समय निकाला, वक्त निकाला और यहाँ आए। बाकी लोगों से भी अब बातचीत करते हैं। कुछ लोग आज जुड़ नहीं पाए हैं, वो शायद मतलब वो कोशिश कर रहे हैं, वो नेटवर्क के इशू की वजह से जुड़ नहीं पाए हैं। एक है हमारी मित्र हरविंदर कौर बबली, पंजाब से है, उन्होंने इसका पंजाबी में भाषांतर किया है। डोगरी में इसका भाषांतर एक हमारी एक्ट्रेस मित्र है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की है, नीलू डोगरा जी, उन्होंने इसको डोगरी में किया है। वो आज उनका अभी शूट चल रहा है, तो शी वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन। She has said she will try her best, but she is still in the shoot, so she is not able to join us. हिंदी में आसिफ अली जो हिंदी के लेखक है, उन्होंने हिंदी में किया है। वो कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की, लेकिन वो एनएसडी के किसी काम में फंसे हुए हैं, तो अगर वो निकल पाए तो वो आ जाएंगे।
हमारे साथ अभी जो जुड़े हैं उनमें से अगले व्यक्ति की तरफ मैं चलता हूं। इस मैसेज को बांग्ला में भाषांतरित किया है ब्रतिन रॉय जी ने। ब्रतिन रॉय जी नमस्कार। हम कभी पहले मिले नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन इस बहाने आपसे भी मुलाकात हो रही है। सो आई वेलकम यू and thank you for translating this message into Bangla. And I would also like to, all of us would like to know your response and your experience and thoughts while translating this message into Bangla. Thank you. Thank you very much to the hosts and to all the people who run the organization IAPAR and who are associated with International Theatre Institute, ITI, who has been continuously promoting performing arts and theater for the last almost last 30-40 years. If I'm not wrong, they have started in 1962. And so the message started then. The institution started in 1946. 1946, but as far as my knowledge goes, I think this is the 60th time in 2022 that we are delivering the message on the World Theatre Day. And I am fortunate, I consider myself fortunate enough to be able to do that this year. I extend my heartfelt gratefulness to all of you who have considered me able enough to translate it in Bengali. I am those people whom I am right now watching and whose valuable comments I'm listening to right now. Their credentials are much more higher than I am. I am a teacher in English language and I am associated with Bhavna Theatre. The editor of the Bhavna Theatre is also here in the show, Mr. Ovik Bhattacharya. I am linked. I am from its inception in the year 2011. I am with this theater. I am one of the sub-editors of the theater magazine, and I from 2012 onward, every year I have translated it in Bengali on behalf of my theater magazine. And this year I am specially privileged to be a part of your team and to be able to deliver it in Bengali. So the person Peter Sellers, who has delivered the speech this year, to my opinion, has done a marvelous job. He has enlightened our inner soul, those people who are involved with theater. It's been a experience going through the speech, and to the best of my ability, I tried to. One of the speaker has been rightly pointing out that it cannot be a verbatim translation, word by word translation. We just try to catch up the mood of the person who has given the speech and try to do it in our own language, in our own vernacular. But in doing so, what struck me the most is the fact that after those 2 or 2.5 grueling years of pandemic that has almost cornered us, that has almost alienated us from the rest of the world, it's been a moral boost. It's been a moral boost personally for me. So when I got the chance, Mr. Ashish Goswami, who was personally told me about this project, and I was enthralled, and I just put down my head and started reading the message this year. It has also been published in our edition of the latest edition of our magazine. It's been done every year, like every year. But after Ashish told me, I just put down my head and started reading, and I was enthralled. Really, the reference of I was reading just a little while ago, the Flower Ornament Sutra by Gautam Buddha. The patience, the quality of patience, the mention of patience, it's actually something that we're losing. We are becoming intolerant. Every day, thousands of instances come into our fore that tell us of
our intolerance. We are becoming intolerant. So to be a part of this theater fraternity, I think this is our prime duty to bring peace, to bring stability, to regroup, to reorganize the world that has been badly shaken by pandemic. So in that perspective, this message has done a great thing, great thing. This is my 10th year of translating. I do not want to demean or take anything away from those people who are also stalwarts in theater fraternity, those people who have delivered the lecture previous year. But this year's message is something very special for me. The philosophy it carries, it's a tremendous, it's tremendous. So I would like to also congratulate you that you have given us the opportunity to read those messages, to be able, this enabled us to get informed about those thoughts, about those visions of those luminaries who are associated with theater. So personally, this is one of my all-time greatest experience, as I have not that much credential. I don't know whether people all over the world or all over the country who know Bengali actually, how they will appreciate it, I don't know. But while doing so, I keep that in mind, that the main spirit, the main thing that Mr. Peter Sellers wanted to convey remains intact. That is the main thing I wanted. I wanted to keep in mind while translating the speech, the message. So I and the second thing that I just mentioned a little while earlier, that everyone, include who think themselves to be a part of this theater world, everyone must read it. And IAPAR is doing a great job. I would personally try to visit your organization, and I would like to enrich myself by meeting you personally. I have a lot to learn from all of you. This is just my humble effort to reach out to you through this translation also. And I would like to all those people who are present here, who have enormous contribution in the field of theater, in the field of performing art. And we have now restarted our life after the almost break of 2.5 years. Although theater has run, theater has never stopped for a while. It has changed its shape, it has changed its form, but still it goes on, because it means life to all of us. Life never stopped for a moment. So theater is life to all of us. It will go on, come what may, whatever the danger, whatever the impediment before us, we will overcome it. And the message also tells us that. And the last line of the message is very important for me, the humiliation with which he thanks deeply for everyone attached with theater for our work. Actually, I think the message is aimed mainly at those young people, those young enthusiasts who are keenly attached with theater. So it offers a ray of hope to everyone. And theater will certainly live and certainly outnumber everything that comes into its foray. Thank you once again to all of you. Thank you very much. Thank you, Pratinji. I will come back to you and Bashir Saab towards the end again. In the meanwhile, I will just move on. अब मैं विनती करता हूँ भैरवलाल दास जी से, जिन्होंने इस मैसेज को, इस संदेश को मैथिली भाषा में भाषांतरित किया है। भैरवलाल दास जी, अगर आप, हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरी आवाज जा रही है आप तक? हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, पूरी तरह से आ रही है। और मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पता है कि आपका एक पैर अभी प्लास्टर में है, लेकिन फिर भी आप आज यहाँ हमारे साथ आए हैं और सहभागी हुए हैं इस चर्चा में, इस बातचीत में। तो मैं चाहूंगा आप भी अपना अनुभव
बताएं। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इसका ट्रांसलेशन करके दिया था, ये भी मुझे पता है, आप तक ये पहुंचते पहुंचते बहुत समय गया था, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक maybe 4-5 minutes and tell us about your experience and your impression of the message. थैंक यू सर, थैंक यू। ये सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं जो आपने मुझे ये अवसर दिया। दूसरा आभार मैं प्रकट करता हूं मैडम उषा किरण खान के प्रति। उषा किरण खान जी ने मुझे ये पीस भेजा जो इसको ट्रांसलेट करना है। मुझे कुछ पता नहीं था कि ये पीस क्या है, और मैंने उनको मैसेज किया जो ये कब तक करना है, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। और हम लोग उषा किरण खान जी के इतने बड़े भक्त हैं, जो वो यदि हमको कहेंगी जो पानी में कूद जाओ, आग में कूद जाओ, तो हम ये नहीं पूछेंगे जो भाई आप ये क्यों बोल रहे हैं पानी में कूदने के लिए। हम पहले कूद जाएंगे, फिर पूछेंगे अच्छा आपने कहा था पानी में कूदने के लिए। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने फिर मैसेज किया जो नहीं आज ही शाम तक इसको दे देना है। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ जब मैंने उसको खोल के पढ़ा, तो मैंने देखा जो अंग्रेजी तो है, और अंग्रेजी काफी टफ है। ऐसे नहीं है जो आप सिंपल पेज को आप कर देंगे जैसा कि सामान्य रूप में होता है। मुझे पुराना अनुवाद करने का अनुभव है। मैंने भारतीय संविधान का मैथिली में अनुवाद किया है, इसीलिए मुझे अनुभव है। जो मेरे गुरुजी कहा करते थे, जो अनुवाद का मतलब होता है जो किसी दूसरे के बच्चे को पालना। बच्चा आपने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन आप पाल रहे हैं, तो उस बच्चे में क्या उनके माता पिता चाहते थे, ये आपको देना है। तो ये लिखने वाले ने जो लिखा है वो संदेश काफी गहरा था। जैसा कि अभी प्रतिनिधि बात कर रहे थे बुद्धिज्म का और उसके धैर्य का, तो मुझे उस टेक्स्ट में तो अपने लिए बहुत कुछ मिला। मैंने जो उसको पढ़ा उसमें मुझे ये महसूस हुआ जो एक्सप्रेशन, जिसे आप ड्रामा कर लीजिए, जिसे आप थिएटर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एक्सप्रेशन इस लाइफ के लिए कितना जरूरी चीज है। और यदि आपको एक्सप्रेशन पर कहीं न कहीं रोक लगाई जाती है, चाहे वो कोरोना के माध्यम से हो, चाहे वो समाज व्यवस्था के बारे में इसमें कम शब्दों गया है। अभी मैं कुछ दिन पहले, जैसा कि मैंने आप सब जानते होंगे, मैं चंपारण गांधी पे पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूं। तो मैंने दीन बंधु मित्र का नील दर्पण नाटक का अनुवाद किया था, मैं खुद से पढ़ने के लिए। तो एक नाटक ने एक एक्सप्रेशन जो था उस समय में 1860 के 50 के आसपास में, उसने समाज में क्या परिवर्तन किया। तो ये जो 2 पेज का जो पीटर साहब का जो मैसेज है, उन मैसेज में मेरे ख्याल से 2000 पेज के संदेश छिपे हुए हैं, और उसमें कई चीजें हैं मनुष्य को धैर्य के लिए, मनुष्य को ये समझने के लिए जो आप यहाँ सिर्फ एक नाटक करने के लिए आए हैं, और आप नाटक करेंगे और आप चले जाएंगे, नाटक आपके दूसरे लोग देखेंगे और आपको याद दूसरे लोग करेंगे। तो मैं वो इसमें इस परियोजना के साथ जुड़ के अपने को बड़ा लाभान्वित महसूस किया, अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस किया। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं जो ऐसे शब्द, ऐसे नाटक या ऐसे कुछ भी चीज दूसरे भाषाओं में हो, तो आप मुझे यह आदेश करें। मैं उसे कम से कम हिंदी और मैथिली में, जो हमारी मातृभाषा है, मैं उसे अनुवाद करके अपने लोगों को दूंगा। जो भाई आप देखिए दूसरे भाषाओं में कितनी अच्छी चीजें आई हुई हैं, जिसे कि हमारे अपनी भाषाओं में आने की जरूरत है। जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, उसको महसूस नहीं करेंगे, तो समाज में अच्छाइयाँ और फैलेंगी नहीं, और यदि अच्छाइयाँ नहीं फैलेंगी तो समाज में बुराइयां फैलेंगी। ये एक ध्रुव सत्य है, और ये हम लोगों को हमेशा प्रयास करना चाहिए। मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे इस लायक समझा और इस परियोजना के साथ जोड़ा, और मैं ये आशा भी करता हूं जो आगे भी इस तरह की कुछ चीजें हो जिसे तो आप मुझे जरूर याद रखेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैरवलाल जी, थैंक यू वेरी मच। और आपने अभी जो कहा कि बाकी भी कुछ साहित्य हो तो आपसे बात की जाए और आप उसको मैथिली में करना चाहेंगे, ये बहुत बड़ा कार्य होगा। क्योंकि वो एक चीज़ आजकल, मतलब पिछले कुछ सालों से कई लेखकों से जब मेरी बातचीत होती है तो ये कई बार बात उठती है कि साहित्य का भाषांतर और विशेषतः नाटक का भाषांतर अन्य भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में होना, इसका प्रमाण बहुत कम हो गया है, और वो होने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हमें कम से कम अपने देश में कहाँ क्या हो रहा है, कौन नए लेखक है,
उसके विषय में पता चलता रहे। धन्यवाद फिर एक बार आपका। मैं आगे चलता हूँ। I would like to welcome Dr. P.V. Radhika, who has translated this message in Telugu language. Interestingly enough, even before we initiated the Indian Center of ITI, Dr. P.V. Radhika has been translating messages every year for last several years. And when we initiated the center, she was the first person to get in touch with us and tell us कि मैं ये कर रही हूँ, and I would like to continue to do that. And it was a great thing that she was doing earlier on her own, and now she is part of us. So Radhika ji, I would like to ask you again your responses and your experience about translating the message. आपको unmute करना पड़ेगा. Yes. Am I audible, sir? Yes. Yes. So good evening, respected translators and all the stalwarts of the theatre presented here. And thank you so much to sir for giving me this opportunity. Actually, sir told me that I'm translating this message since so many years. So I should tell one thing here. It's the credit is not mine actually. It's my father is a drama artist. He is worked in All India Radio. So my father actually instituted this World Theatre Day every year, March 27th. He used to perform this every year without fail. Since 25 years he has been doing that. And unfortunately in the last May he expired. But I thought that this tradition must continue. So what I'm doing is I'm doing this translation. So let me continue this as a memory of my father. So that is only the thing I'm giving my what do you call my tributes to my father. That is the thing, and the credit goes to my father. So my blessings should come from him. And another important thing, yes, as a message given by today's message, Peter Silas. He said one thing: we need to gather. One sentence is there. So sir has done that actually. So that was put in practice by our Vidyanadhi sir. Like he has done a very what do you call experimental thing, like bringing us all together. Like it's like unity in diversity. Like bringing all the languages in one place. It's very nice. That I'm very fortunate. I'm very proud that I'm here on this particular thing. So till now I translated like nearly 10 messages I translated, and one proudish thing I should tell you is I translated the Indian Bajaj search translation also. I did that, and I could not do the Girish Karnad's translation. And one only thing I would like to tell you is I just wanted to bring all the translations in 64 to till this date as if in a form of a book. I'm planning for that. So if I do that, I need help of you, sir. I may ask your help also for doing that project also. Sure. So, and important thing is in this message, I thought that it's a message of some what do you call some vision and message of the past, inspiration, aspiration, and some sort of what do you call some strain which we are feeling when we get some pain. So that sort of what do you call experience I have seen in that message. So every year when I translate some message, it's not quite easy for me to translate the message because every personality will give the message in different forms, like according to his thinking. What we have to do is we have to put our shoes in their feet and we have to do the translation. That is very important because it's not that much easy, like because in theater arts, and as I told you, I'm not a theater artist, but because I used to go with my father, I know a little bit about the drama and theater arts in Telugu. So because of that little knowledge, I could do this. So what I've done is excuse me, shall I stop anything, sir? Please go ahead. Please go ahead. Okay.
what is the thing is like every message is giving me something like we have to just go very deep into their subconscious brain and subconscious part of the particular personality who is giving the message. Then only we can bring the correct spirit of the message into our language. As previously so many of you told that it's not really translation, but what I feel is translation is something which is should be nearer to the language, and also the what do you call, the syncing of the message should be, both should be equally balanced. That is what I feel like as per my experience since all these years. And putting the my feet in other shoes, like in Peter Silla's message, what I observed is like he told that we are in epic period. So that epic word is like we are not living in epic Ramayana and Mahabharata age, like, because what he told us, we are in that very very serious conditions in which we are living, where we are not bothering about anything, but just we are dwelling in only in the media, and we are just sitting and seeing the televisions, and even the platforms of social media and all other medias are just, we are not observing what is going on in the world outside, and what the theater is doing, and what contribution we are giving to the theater. And theater form is not having its existence on this particular platform, on the actually on this planet. And even has talked about the even non-human beings also. So when we are touched with ourselves, with human beings, and we are touching with the others, like even like animals or plants and all living beings, then only we can give such a, what do you call, have a dramatic expression. Then only we can feel that what do you call, the spirit of that drama. So that's what I observed in his message. As I told you, as he told that it is a form of language. Actually today we are missing the part of language. Actually language is not properly spoken by, because I'm an assistant professor, I'm observing students like they don't actually have a good what do you call, foundation in their language skills. They are missing the language. So theater is another art form where we can have some good foundation for giving the language as a main tool to inculcate the language skills in the students. So what I mean to say is linguistic skills and intelligence skills and all the skills which are needed by a student can be given by a theater arts. That's it, no other way. So theater arts has the ability to provide all the skills which a person, which a child needs for their overall personality development. That is what I'm thinking. And that part is not being observed, and unfortunately in our state uh, we have a less number of performances in theater arts, and less number of encouragements also. Even we don't have those courses in universities and colleges also. I'm just speaking about this to so many people which I know here in locally. And I cannot do it alone. As I told by Peter Sellers also, we cannot do it alone. We have to do it together. We have to do it. It's not a single man's job. So that was also told by him. And as I told, many told that Buddha's the marriage thing which he concluded in the last paragraph, that is, yeah, it's definitely, it's like a marriage only. Like we are not able to find this as a like an art form. So what we think is, we have in Telugu we have a Surabhi art drama form, like where they are all just very, they sacrifice their life to their theater forms, all the family, it's like family. So even today we are not able to see them, and they're very in a miserable condition. And here also we don't have theater arts where they pay ticket and they go for the drama. They're very interested to pay, go for pictures and cinemas, and go for cinemas, but they're not interested to, I mean, buy a ticket and see a drama. That is a very miserable condition which should be improved. On this note, I request sir and all the what do you call, theater personalities and all the great persons over here, to see that this theater art should be developed as something like a subject, and also as something which should be grown exponentially all over the world in all languages, not only in one state but all the languages in all states. So whatever efforts we can do in that way.
and we promote the theatre arts, then we can see that theatre arts will survive as has been perceived by our Peter Silas sir. That's it. Thank you, sir. Thank you so much for giving me this opportunity. I'm very honored for this particular opportunity. And my namaskaras to all the other translators who have been here. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Dr. Radhika ji. I must say here that no one needs to thank me. It is International Theatre Institute which has been doing this work tirelessly for several years. Every year there is a message. Every year there are people from around the world giving the message. And every year there are people like all of us who are translating it and making sure it reaches in multiple languages in multiple corners of our world. So thank you all for translating this message. Now I go to the last person in this meeting, Rucha Mule. She has translated this message into Sanskrit language. And it was a pleasure to have this message in Sanskrit. So Rucha, would you like to respond about your experience and what you feel? Sure. Uh, Thank you, Prasad. It's like I think I share the sentiment of everybody here that being part of something like this is actually enriching and overwhelming in a way. And like what Vibha said at the outset, she was like, I'm a theater practitioner, not a linguist. So how am I considered for this? I am neither a linguist nor a theater practitioner. Kind of married into theater, not kind of course, married into theater. So and a language enthusiast, although not a linguist. So it was. Trust me, when I began, it was something I wanted to have fun with, to be very honest. I wanted to enjoy what I was doing. And so when you sent me the message from Peter Sellers, I was like, okay, I read it 5-6 times before I said, okay, to it. That yes, I'll do this. The reason being, I mean, I am a person who's not into theater, but kind of watching from the borderlines. I thought I see it as a performance, something that I can see, I can perceive in a tangible way. But what this message was expressing the intangible behind theater. Right. It was giving us the abstract, what theater as an institution thinks or feels, or should feel for that matter. So in a way that was good for Sanskrit translation, because as we all know, Sanskrit is probably one of the best used languages for philosophical thought expressions all over the world. So a lot of philosophical discussion happens. So in that way, Sanskrit had a lot of vocabulary and nice ways of expression to offer on offer while I was translating the content. Having said that, the flow of language that Peter Sellers' this message had, it was completely different from any Indian language that we speak, let alone, let Sanskrit aside. So we don't speak Sanskrit. So the challenge was, while yes, Sanskrit had very interesting options on offer, they might have proved to be equally intangible had I had the courage to use them. So I think my biggest challenge was to keep this understandable in a way that it will be Sanskrit and it will contain the essence of the message as well. So, so I had to use certain type of language, and that's why I think a little
deadline issue occurred because of that as well. So, but yeah, in the end, I think it turned out well. Like what Bashir Saab said, I shared with few peers who are Sanskrit professors or people who speak Sanskrit, and they said, yeah, it does give you what is said, and it has come out nicely. However, I would like to know if few of us have gone through it and seen if the essence is captured there. And again, thank you. Like I said, I'm not a theater practitioner, so the deep, passionate theater related thoughts everyone else has put in, I kind of resonate with those as someone who appreciates theater, but in that area, I think I have hardly anything to contribute. So my 2 cents is definitely about the how uh, how my tools went into translation. So that's it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Rucha, for that elaborate idea and your thoughts. Now, what I'm going to do is I'm going to speak with our friend Avik Bhattacharya, who is with us here. But while I'm speaking to him, I request the translators to think about 2 or 3 lines as a response to this message in your own language. So, after my Bangla, Sanskrit, maybe 3 or 4 lines about the message, not elaborate thing, just a small brief thing. And please, in your own language, ask people to visit the ITI website, visit the IAPAR website, and check these messages which are available online. So you have a few minutes to think about it, and I will quickly go to Avik Bhattacharya ji. Avik ji, namaste, welcome. Namaste. Namaste. Glad that you were able to join us today. Avik Bhattacharya is a theatre critic, journalist from West Bengal, and the magazine that Bratin ji mentioned, Avik is part of it. I mean, I don't know whether Avik is part of it as Bratin is part of it, kind of scenario. So all of them are working together very hard. And Avik was here in Pune during the IAPAR International Theatre Festival a few years ago, before the pandemic. So Avik, I would like to ask you that you publish a magazine, and you have Bratinji also mentioned that you have published this message in the magazine. So you have been involved in literary activities. How do you look at all these messages over the last few years? मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि मैं हिंदी में बोलूंगा क्योंकि ये फ्लुएंसी ज्यादा ठीक ठाक होगा। तो पहले जो बोलना है तो ये है कि मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। ये तो प्रोटोकॉल नहीं, उससे ज्यादा कुछ है कि इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट को, उसके साथ साथ हमारा जो इंडियन चैप्टर में आईपार काम कर रहा है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आईपार को मेरा थैंक्स है। उसके साथ साथ प्रसाद जी और डॉक्टर आशीष कुमार गोस्वामी जी, सबको मैं मेरा प्रणाम। और आज का ये जो टॉक चल रहा है, ये जो बातचीत हो रहा है, ITI का जो मैसेज इस 2022 का जो मैसेज के लिए, ये इसमें मैं तो ऑड हूँ क्योंकि मैं एक ट्रांसलेटर नहीं हूँ, लेकिन हमको ये आमंत्रित किया गया है, इसीलिए मैं दोबारा थैंक्स देना चाहता हूँ जो डिग्निटरीज यहाँ पर है सबको। और पूरा पीछे से जो काम संभल रहा है वो बहुत टफ है। आईपार से ये जो टेक्निकल काम संभल रहा है, सब आर्टिस्ट को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। तो दादा, तो मेरा पहला बात है कि हम लोग ये थिएटर मैगजीन पब्लिश करना शुरू किया बंगाल से, कोलकाता से, तो 2011 में, 2011 साल से। और हमारा जो टारगेट था, मकसद था, जो लक्ष्य था, वो था कि ये बंगाल का जो थिएटर प्रैक्टिस होता है लार्जर एरिया में बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स है, गाँव में, जिले में, और तो कलकत्ता में तो है ही है। तो ये जो बंगाल का थिएटर के साथ बाहर का थिएटर का जुड़ने का एक चांस हमने लिया, हम ट्राई किया, ये हमारा लक्ष्य था। क्योंकि हम जानते हैं कि थिएटर में जो 3 जो शब्द है इंग्लिश में, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो है कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, उसके साथ साथ जो आता है वो मिलके, वो है कम्युनिकेशन। तो थिएटर एक कम्युनिकेटिंग मीडिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत प्राचीन सा कम्युनिकेटिंग मीडिया है, जिसका बोलता है हम कम्युनिकेटिंग मीडिया का मदर है।
तो इसीलिए तो हम ट्राई किया 2012 से एवरी ईयर हमने ये मैसेज को बांग्ला में ट्रांसलेट करता हूँ कि इंडियन बांग्ला लैंग्वेज में। तो ये ट्रांसलेशन हम करके हम वहां पर चुपचाप नहीं बैठते थे, क्योंकि एवरी ईयर ट्रांसलेशन के बाद हम लीफलेट जो है लीफलेट बनाते हैं। उसके बाद जो थिएटर के ग्रुप्स है, थिएटर का फ्रेंड्स है, स्टूडेंट्स है, उनको उनको वहां पर बांटते थे। तो हाथे हाथ चले जाते थे वो लीफलेट। तो वो पढ़ के देखते थे कि वो उनका मन में, उनकी भीतर में क्या क्या होता है इंग्लिश से बांग्ला जब आता है। तो हमारा जो रियलाइजेशन है वो है कि ये लगभग 10-11 साल हो गया ये ट्रांसलेशन को इंसिस्ट करने का जो चांस हमने लिया। मैं तो चीफ एडिटर हूँ इस मैगजीन का, भावना थिएटर का। तो मैं पूरा एक सेकंड में देखा तो ये लास्ट एडिशन है, ये मिरर इमेज है। तो ये है जो पीटर सेलर्स का जो ये बांग्ला में ये अभी आया। तो जो जो मजे की बात है कि बांग्ला में पूरा वेस्ट बंगाल की कोने कोने में अभी 27 मार्च एक बहुत बहुत सारे उत्सव की तरह होता है। और गांव से शहर तक सब जगह पे ये जो बांग्ला ट्रांसलेशन है ये वो पाठ किया जाता है, बानी पाठ किया जाता है। और उसके बाद बानी पाठ होने के बाद उसको डिस्क्राइब किया जाता है और डिस्कशन भी होता है। ये एक महत्वपूर्ण हमने जो ट्राई किया, वो जो उद्योग लिया वो हमने ये कर रहा है। और जो 10-11 साल से ये जो बानी हमने देख रहा है, इसमें खास बात यह है, इसमें स्पेशलाइजेशन ये है कि जो सीनियर जो डायरेक्टर आर्टिस्ट जो जिन्होंने ये बानी देते हैं, ये हर एक व्यक्ति का जो अपना जो सोच है, अपना जो कल्पना है, अपना जो समझ है, उसके ऊपर उन्होंने जो फीलिंग्स है उनको वो व्यक्त करता है वर्ल्ड वाइड। लेकिन इसमें एक बहुत सारे डाइवर्सिटी देखने के चांस मिलता है। बहुत बहुत वैचित्रता है, विचित्र जो एक्सपीरियंस होता है। इससे क्या है कि हमारा जो एक्सपीरियंस का जो झोली है, जो बैग्स है, वो बहुत बढ़ते जा रहा है। और उसके साथ साथ हम भी इसको लेके जब चर्चा करता है 27 मार्च के बाद, जो पूरा साल भर के अगले 27 मार्च अगले साल आने के समय तक जब हम चर्चा करते हैं, उसको हम ध्यान में रखते हैं कि इस साल जिन्होंने वाणी दिया, जिन्होंने मैसेज दिया, उसका गुरुत्व क्या है, उसका जो इम्पोर्टेंस क्या है, उसको लेके काम करो, उसको लेके ध्यान में रख के आगे चलो। और दूसरा नेक्स्ट ईयर जो वाणी देता है, उसका वाणी में क्या क्या खासियत है। तो इसमें इस बार जो स्पेशल जो मेंशन हमने जो देखा, जो वॉच किया, उसमें से बहुत जो यहाँ पर जो डिग्निटरीज है जिन्होंने ट्रांसलेट किया, उन्होंने भी बोला कि गौतम बुद्ध का जो टच है, उनका स्पर्श है। तो इसमें हमको बहुत सारे चीज मन में आ गया। और उसके साथ साथ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है पीटर सेलर्स जी ने जो किया, वो इकोलॉजी के साथ, हमारा जो नेचर के साथ, हमारा विश्व के जो नेचर है, पृथ्वी का जो नेचर है, क्योंकि हम तो नेचर का जो सन है, हमारा नेचर का डॉटर है, हम तो नेचर का ही भी संतान है। तो इसीलिए नेचर के साथ जुड़ रहना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंस तब सफल होता है जब एक थिएटर आर्टिस्ट और थिएटर ग्रुप और थिएटर फ्रेटर्निटी जब इसको समझते हैं और इसको समझ के एक्सप्रेस करते हैं, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के साथ साथ कम्युनिकेट करता है। तो इसीलिए जब लास्ट 10 साल हमने ये ट्राई किया, 11 साल हो गया ट्राई किया, तो हमने ये देखा कि ये 10-11 साल में एक कलरफुल जो आइडियाज है थिएटर का। थिएटर में तो कल्पना बहुत स्ट्रांग होता है, होना चाहिए। तो एक कल्पना का जगत, कल्पना का जो एरिना वो बढ़ गया है, वो विस्तृत हो रहा है। ये हम बार बार बोलते हैं, हमारा जो फ्रेंड्स है, हमारा जो रिसर्चर्स फ्रेंड्स है, और हमारा जो डायरेक्टर्स है और जो आर्टिस्ट है, उनके पास जाके उनके साथ शेयर करके, और सोशल मीडिया, अभी सोशल मीडिया स्ट्रांग है, सोशल मीडिया में भी हम ये बानी स्प्रेड कर देते हैं। और उसके साथ साथ ये भी होता है, हम नहीं जानते, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आता कि किस कोने कोने में ये पाठ हो रहा है, ये बानी, ये मैसेज पाठ हो रहा है। वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है। तो ये समझने की जगह आ गया है, थोड़ा बहुत आ गया है, ये 10-11 साल में स्ट्रांगली आ गया है बांग्ला थिएटर प्रैक्टिशनर्स के भीतर। तो ये तो आईटीआई के साथ जुड़ रहने का एक मौका हमको मिला। और आप इस समय आईटीआई और इंडियन चैप्टर में आईपीआर जो हमको ये चांस कर दिया इंटरनेशनल एरिना में, ये तो हमारे के लिए अगले समय के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया, क्योंकि हम और भी ज्यादातर बांग्ला थिएटर प्रैक्टिशनर्स के पास जा सकेंगे, और ये रास्ता भी तैयार और भी
स्ट्रांगली हो गया। इसीलिए फिर एक बार धन्यवाद। थैंक्स। थैंक यू अविक जी, धन्यवाद। आप आज शाम को समय निकाल के आए, थैंक यू वेरी मच। आई विल गो बैक टू आवर ट्रांसलेटर्स फॉर देयर क्विक रिस्पॉन्सेस। हमारे जो ज्येष्ठ मित्र है, रंगकर्मी है बशीर साहब, उनसे शुरू करना चाहूँगा। बशीर साहब, अगर आप कश्मीरी में कुछ 2-3 लाइनें कहें जो इस मैसेज के संबंध में आप कहना चाहें तो प्लीज। इससे पहले कि मैं कश्मीरी में 2-4 बातें कहूँ कि मैंने जो टाइम मांगा था बीच में, तो मैं उसमें इजाफा करना चाहूँगा कि मैंने शुरू में बहुत कंप्रेसाइज करके शॉर्ट करके कुछ बातें कही थी। इसमें 1-2 बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो जो लैंग्वेज की बात वो करती है, वो वर्निकल लैंग्वेज की बात नहीं करती है, वो असल में हमें विजुअल लैंग्वेज, थिएट्रिकल लैंग्वेज की बात करती है कि हमें थिएटर की अपनी लैंग्वेज जो क्रिएट करनी है वो कहाँ है। तो उस लैंग्वेज को ढूंढना एक चैलेंज दिया है। एक तो ये उन्होंने बात की, उसमें आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी इमेजिनेशन, आपकी हिस्ट्री, आपकी तारीख, आपकी बाकी जो सोशल लाइफ है, उससे वो जुड़कर आप वो लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट में जो उन्होंने एक और बात कही है, ये जो है एपिक्स की जो विजन है जो क्रिएट करना है कि हमें जो महाकाल के दौर में हमने अपने क्षेत्र को आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लोर करना है, तो वो एक और चैलेंज दिया है रंगकर्मियों के लिए, हम थिएटर वालों के लिए। और लास्ट में बात जो मुझे ज्यादा मतलब वो मैं कहना वो मोटिवेशनल, चैलेंजिंग, ये बल्कि ये इंस्पिरेशन मिल लगा कि जब हम बात करते हैं कि हमें अपने थिएटर को बहुत आगे लेना है, क्योंकि आप ये 21वीं सदी है, तो क्या हम 18वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक क्या हमारे ब्रेन, हमारे जहन, हमारा दिमाग, हमारा तजुर्बा भी इतना विस्तार से एक्सप्लोर हुआ है? तो वहां पर वो कहते हैं कि जो भी आपने करना है, आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, अकेले छड़ी टूट जाती है। तो ये एज अ कम्युनिटी हमने जुड़कर अपनी स्पेस क्रिएट करनी है, क्योंकि थिएटर को जो स्पेस होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये नेशन बिल्डिंग में एक इम्पोर्टेंट इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। तो इसके बगैर आज की दुनिया में अगर आप समझेंगे तो बहुत कम है कि जब हम कहेंगे कि हमारे सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। विदाउट थिएटर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें पूरी कम्युनिटी को आपस में जुड़कर ये स्पेस क्रिएट करनी है। और जब हम वो स्पेस क्रिएट करेंगे तो आगे हमें ऑडियंस भी मिलेगी, लोग भी मिलेंगे, हमें पॉपुलर लेजिटिमेसी भी मिलेगी, लोगों का वो प्यार भी मिलेगा और वो ऑडियंस भी मिलेगा। तो आप जब आपने कहा कि कश्मीरी में कुछ बातें मैं कहूँ, तो मैं कश्मीर में अपने इस जो भी दुनिया भर में जहाँ से कश्मीर जो समझते हैं, तो मैं उनसे यह कहूँगा कि थिएटर ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या है। इसके तो वन है स्कूल में पढ़ान एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ड्रामा गिंदन नसन गेवन ना। थिएटर बजात खुद इदारा, मुल्क तो कौम तमीर कर, इंसानियत तमीर कर, इंसानी रिश्तन जोड़न, इंसानी रिश्तन पानव तराशन, इंसानी रिश्तन पानव संभालन। ये सह कथ आम कि कत हको पे रिश्ते संभालित, तो पान तको संभलो, पान रिश्ते तको संभालित। ह्यूमन रिलेशन इंसानी रिश्ते त्रेयम कथ वो मे वही हिंदीस मं बहुत बार बार वन कि पन्न थिएटर वालन जानियो तुम कि बस जहनी अयाशी, यह मेंटल लग्जरी क्या, यह जहनी अयाशी क्या, यह सह फन ये सब्रस सलिम तो ज्ञान हासिल कर जरूरी, तथ मेहनत, तजुर्बे, समझदारी तो इंसानी जिंदगी हूँ मुशाहिद कर सठा जरूरी। तो बह वन तिमन यह कि तिम पर्यन अंग्रेजी मैसेज तशर मैसेज तत कर तिम पान एक्सपीरियंस, पान कर तिम मुशाहिद कि अस कत जिम्मेदारी। थिएटर इंतहाई जिम्मेदार शोब, इंतहाई जिम्मेदार। अत मन यीव जिम्मेदारी सान थिएटर वोल, थिएटर कर वोल, रंगकर्मी, या ये वनोस ड्रामा निगार, या वनोस अदाकार, या वनोस
या सा ये हदायतकार या मूसीकार यम शोब तिमन तमाम शोबन हूँ एहसास जिम्मेदारी सह पन्नस जिंदगी उंद पुख जमा कर मुशाहिद कर तजुब हासिल कर अद हेकु तुम यह थिएटर पन आलमी सतह पर वात जरूरी कि प्रत कह थिएटर गछ वातुन आलमी सतह पर यह अंग्रेज पे करो अगर शेक्सपियर करोन कशिर पे अगर सोफोक्लिस करोन कशिर पे अगर गोयटे करोन कशिर पे अगर टैगोर करोन कशिर पे सह कशिर पे सही जबान अन सिर्फ लफ्जी तर्जुमा कर तो वन ना तथ छाड़ यह कोता रिलेट कर यह कोता सान जिंदगी सह जुड़ान वाट थान अद हे तथ कंटेम्पररी रिलिवेंस हम असर दौर आगही तो बे मुशाहिद तथ मिलाव मेलान सह पैद कर जरूरी अद हेको पन थिएटर ब्रो पकड़ तो पन्नस थिएटरस पन प्रेजनत संस्कृत प्रेजनत बंगाली प्रेजनत हिंदी प्रेजनत यम अलग अलग पन शोब यह हेको दिख तो बह कर पन्न नाटककारन गिंदन वालन ड्रामा निगारन ऑडियंसस कि तिम पर्यन यह सठा बेहतरीन खूबसूरत मैसेज यह पीटर सलार सुन तो बे पे सत पस कौशल तर्जम ती अगर समझ मुश्किल गल तो कशर पे हेको आराम से समझ। धन्यवाद धन्यवाद बशीर साहब। कश्मीरी समझता हूँ कि नहीं समझता हूँ ऐसा मैं कंफ्यूज हो गया। आप इतने पैशन से बात कर रहे हैं तो ऐसे लगता है कि हर एक लफ्ज समझ में आ रहा है और काफी सारी चीजें समझ में आ भी गई। तो ये शायद थैंक यू वेरी मच और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया, मैं ये भूल गया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ढूंढ निकाला। और इससे पहले मुझे जैसे बंगला दोस्त थे हमें रॉय साहब ने कहा, मुझे आशीष गोस्वामी ने पहले ही ये भेजा था कि जरा इसको कश्मीर ट्रांसलेट करो। मैंने कहा कौन पढ़ेगा, इसलिए करो। लेकिन बाद में जब आपका मैसेज आया कि ये इस तरह से करना है, फिर मैंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, चलो मैं करूँ। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आई विल गो टू रुचा। Rucha, would you like to say something in Sanskrit? You need to unmute yourself. Sure. धन्यवादः। नमस्सुहृद्भ्यः। विश्व नाट्य कला दिवसोत्सवमधिकृत्य अमेरिकायाः नाट्य ओपेरा महोत्सवानां सञ्चालकस्य पीटर सेलार्स महोदयस्य नाट्यप्रेमी जनाभिमुखः सन्देशः अन्ताराष्ट्रीय नाट्य संस्थायाः ITI इति अन्ताराष्ट्रीय ललित कलाभ्यास प्रस्तुति संस्थायाश्च IAPAR इति अन्तर्जाल संकेते विद्यमानः अस्ति। सौहार्दपूर्णं नाट्यविश्वं सहकार्येण कथं संकल्पयितव्यम् इति तस्य संदेशस्य सारांशः वर्तते। अवश्यमेव पठ्यताम्। धन्यवादाः। Thank you Rucha. Now I would go to Dr. Radhika. Would you say something in Telugu? Yes sir. విస్తృత వార్తా ప్రకటనలు, అనుభవాలు, భయానకమైన భవిష్యత్తులో మనం మునిగి తేలుతున్నాం. జీవితం, పర్యావరణ వ్యవస్థ, స్నేహం లేదా విచిత్ర విహంగంలో మనం నాణ్యత అనుభూతి పొందడానికి ముగింపు లేని పునరావృతం అవుతున్న ఆలోచనలను దాటి ఎలా చేరగలం? అలాంటి ఈ భయానక సమయంలో ఎటువంటి ఆలోచన విత్తులను నాటగలం? అలాగే మానవులు, దేవుళ్ళు, మొక్కలు, జంతువులు, వానచినుకులు, కన్నీళ్లు, పునఃసృష్టి మధ్య ఆలోచన సమానత్వంతో ఉన్న భూమిని మనం సృష్టించడానికి ఒకే ఒక మార్గం రంగస్థలం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. And then I go to Mr. Bratin Roy. If you could say few lines in Bangla about the message and what you would like to tell. You need to unmute yourself. Am I audible right now? Yes. Okay, so I would like to read two parts of two poems actually that would echo the thought of the speech given by Mr. Peter Sellers. I would thought it best to actually I think it would be better to read those parts of poem than to express my own words. Sure. So first one is composed by Rabindranath Tagore.
who has given us the language to be proud of. So I'm now reading. দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে সেই রুদ্র দূতে বলো কোন রাজা কবে পারে শাস্তি দিতে বন্ধন শৃঙ্খল তার চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার. So I would also like to offer my obeisance to all who have been playing the role of torchbearer in the field of art and theatre. And the last one that I want to read is a poem named Pathok, written by one of the most famous contemporary Bengali poet, Mr. Joy Goswami. Just a few lines of that poem. He says, আমার পাঠক চাই না একজন পাঠক পেলেই সম্বল বলে তাকে বসাবো চেয়ারে আমি বাতি হয়ে জ্বলবো টেবিলের ধারে. I would like to pour my heart out in my effort to enlighten, even if there is one who is languishing in darkness. And I think this is the thing that an artist should look for. Thank you. Thanks to all of you once again to give me the chance, to give me the opportunity to air my views, to interact with people like you. Thank you. Thank you. Thank you very much. So with this, we come towards the end of today's session. I would like to thank all the translators who have translated this message. People who are watching right now, you can read all these messages on IAPAR website. You would find a link. You can go directly to the ITI website and all the messages are available there to download and to read. So please feel free to do that. Next year, we are hoping that we would have many more languages in which this message will be translated in India. We have several official languages and we aim to have translations in all official languages at least, if not the dialects. So next year, we hope that we would have many more people in this kind of informal conversation with many more translations as well. International Theatre Institute has been doing this amazing work for several years. It continues to do so. And all of us are committed to connecting with people from around the world and looking at various possibilities of being together, collaborating with each other, and learning from each other on creative front as well. So once again, I would like to thank you all. I would like to thank the team of IAPAR who put this whole thing together, and all of you who decided to join today. Thank you. Thank you very much. We will close the session now. Dhanyawad. Just give me a second. I'm going to check if the live stream is off. You can stay on the meeting. Yeah, I think we're. Thank you. Thank you so much.